So let me, okay. So hi, in this video, I am going to explain to you how you can integrate your prelims and mains preparation for the civil services examination 2023. Guys, we are in the month of October and we have around 2.5 months in this year, and in the next year we have around 5 months for the prelims. Okay, so if you see, you have to start a dedicated preparation from February onwards for the prelims examination, because at least you must devote 3 to 4 months dedicated for the prelims preparation. Okay, so now since it is October, it is an ideal time. Okay, in the next 3 months. Okay, in the next 3 months, October, November, December, January. Okay, so 3.5 months you have, where you can basically integrate your prelims and mains preparation, and you can cover the mains syllabus, at least one reading, in an integrated manner, and cover some basic prelims, all the basic books of prelims also in an integrated fashion. So in this video, I am going to explain to you how you can achieve that. Okay, and if you have any doubt, you can you can just stop me and you can ask doubts. Okay. So what I have done is that I have prepared a 180 days plan. You can see here, I have prepared a 180 days plan for the mains. Okay, so I have covered GS 1, 2, 3, 4, every subject, GS 1, 2, 3, 4, all the GS subject I have covered. And one beauty of this plan is that I have picked each and every topic which is mentioned in the syllabus. Every topic, I have not left any topic. I have not left any topic. So if you follow this plan, one advantage you will have is you will be able to cover the entire syllabus in a holistic manner. Generally, what happens when we start preparing for the mains, since the syllabus is scattered, and a lot of topics have been mentioned, and generally what we tend to do is that if suppose we start reading on our topic and if we do not have sufficient study material, so we tend to skip that topic and jump to some other topic. So it is called a haphazard way of preparing. If you prepare this 180 days plan, you can, in a scientific manner, each and every topic of the syllabus, you can prepare in the next 180 days. Okay. So now what I will do is that I will help you to integrate this mains timetable, which I have prepared for the next 180 days, which is a daily target based plan. Okay, where I will be giving you a mains master note on each and every topic of the syllabus, which you need to prepare. And I'm giving you every day 2 or 3 questions to practice once you read this question. And after you cover one section, you have a sectional test also. So how to integrate this with the prelims plan, with the prelims preparation. So this is the prelims plan, 1 year prelims plan. So obviously this plan has started in the month of June because it's a 1 year prelims plan. But still, if you follow this video, still you can integrate this prelims and mains in a effective manner. If you start from today also, if you decide to start from today, you can do it. You can achieve it. How you can achieve it? That is the topic of the video. So what we will do, sir, let us see the plan and let me explain to you. So if you see the plan, if you observe the plan minutely, what we will observe, that what I have done is that I have divided the syllabus into various sections. So GS3 paper I have divided into various sections. You see here, first section is core of Indian economy, basic core of Indian economy, like where we have to study about economic growth, Indian economy issues, employment, planning, growth, etc., etc. So if you see, when you are preparing these 7 topics, along with these 7 topics, you can easily prepare the macroeconomy. You can easily prepare the macroeconomy, basically the static part of the economy syllabus. You can prepare this. You can refer. In the morning, what you do is that before you read the mains master note, what you do, you read your static book. Here I would like to recommend you, please refer NCERT macroeconomy book. NCERT macroeconomy book and one reference book. So I will recommend you, please read Shankar Ganesh. It is a thin book compared to other books which are very bulky and of not much use. If you see the questions which have come in the prelims examination, they test your basics.
So I think for covering basics, this 200 pages of Shankar Ganesh is more than enough. And then if you are following the DPN, daily prelims notes, so all the important current issues along with their basic concepts are already covered in the DPN. So you need not read, okay, a bulky book. Okay, so avoid reading like 400, 500, 600, 700 pages. I see many students pick up notes, okay, prelims notes, 700 pages, 800 pages of it for economy. I think that is a complete stupidity. Don't make that mistake. This Shankar Ganesh book is good enough, okay, for the prelims. Okay, for the prelims, if you are properly preparing current affairs. So what you do, you pick this book, NCRT and Shankar Ganesh, and in the morning, what you do, you devote 2 hours for your prelims preparation. You devote 2 hours for your prelims preparation, and first you try to read Shankar Ganesh and NCRT. You can integrate these two books. So what you can do is, suppose you have the topic that day, okay, economic growth and development. Suppose you have the topic economic growth and development. So what you do, you open the NCRT and you open the Shankar Ganesh and go for the topic national income. Go for the topic national income. So basics of GDP, how GDP is calculated, okay, what are the various methods of calculation of GDP, what are the various issues of calculation of GDP, all those things will be covered. So basics you will cover from these books, and the advanced part, the analytical part of economic growth and development will be covered in the mains master notes. Similarly, here you see resource mobilization, government budgeting. This will be basically nothing but fiscal policy. This will be nothing but fiscal policy. So what you do, in the morning you read fiscal policy from NCRT and Shankar Ganesh. In the morning you read fiscal policy from NCRT and Shankar Ganesh, and in the evening or afternoon 3 hours you allocate for these mains master notes, where same thing will be covered but in an analytical manner, in a mains oriented manner. For example, when you will cover the fiscal policy from the NCRT and Shankar Ganesh, obviously that will not cover in depth the FRBM Act, the fiscal monetization, all the issues which were in news in the last couple of years from the perspective of mains. On these topics I have covered. For example, in taxation, in prelims, what you have to read, okay, what are the different types of taxation, direct taxes, indirect taxes, what are the different types of direct taxes, what are the different types of indirect taxes, okay, what is how the money, okay, which comes from the budget, okay, how it is spent, what is capital expenditure, what is revenue expenditure, all those things you will study in the morning. And in the evening, you will basically study the analytical part through the mains master notes. So try to keep, okay, as integrated as possible. So try to cover these prelims and mains in an as much integrated. Obviously, see, every topic you will not find a corresponding prelims topic. Okay, for every prelims topic, you will not find a corresponding mains topic. So don't worry. Whatever is possible, how much is possible, you try to cover it. You try to cover it. So you will see here, employment is also there. Employment is also there in prelims. Okay, you have to study for prelims Shankar Ganesh. You have to read employment, inflation, okay, unemployment problems, and you will basically read here also. Here I would also say that please refer the Indian economy book NCRT, Indian economy book NCRT, Indian economy book NCRT. So when you read Indian economy book NCRT, here a small advice I have, that mostly all the concepts which are there in the Indian economy book, okay, from the mains point of view, the NCRT, I have already covered in this mains master notes. Okay, so you need not prepare notes of the Indian economy. Okay, just you read the Indian economy, okay, and focus more on the prelims oriented knowledge, because mains oriented stuff I have already taken from this NCRT and I have incorporated in the mains master notes. However, I strongly recommend every one of you to please read the Indian economy class 11 book also. It is very important book. It is a very important book. There are various concepts mentioned in that book which has been asked in the UPA in the UPSC in the previous prelims examination. For example, if you see the chapter in the Indian economy and environmental issues, they have mentioned carrying capacity. Carrying capacity has been asked by UPSC many number of times in the prelims examination. Okay, so a lot of important stuff is also mentioned in that book. Of although the data which will be available in the Indian economy NCRT book will be an old data, so data you need not worry much. Although important data will be covered here, updated data will be covered in the mains master notes. So okay, so if you see here, obviously these are the okay, how many books you have for the prelims? You have, okay, you have two NCRT books. You have two NCRT books. One is the macroeconomy and other is the Indian economy.
okay, and one Shankar Ganesh. So 3 books you have to cover. Obviously, it will take time. So what you have to do is that, see here, when agriculture is going on, second economy, second section, agriculture I have covered. So there you can continue with this reading. You can continue with this NCRT and Shankar Ganesh. NCRT and Shankar Ganesh, you can continue and you can try to cover. If you see section 2 and section 3, till section 3 we have economy. So till day 28 we have economy. So till day 28, you can have a target to finish NCRT and Shankar Ganesh. Here my advice to you is that the same chapter from NCRT, suppose you pick up fiscal policy from NCRT, so simultaneously you read fiscal policy from Shankar Ganesh also. Simultaneously you read fiscal policy from Shankar Ganesh also, and then you read the mains master note. So a little bit twisting of the plan you can do as per your convenience also. It is not that you have to like blindly stick to this plan. Little bit twisting here and there you have to follow. The point is you have to make your preparation as integrated as possible, as logical as possible. Okay, as possible, because for every, as I told you, for every topic you will not have a prelims topic in the Shankar Ganesh, or you will not have a prelims topic in the NCRT. For example, food processing, it is not there in the prelims exam. Okay, mission agriculture, technology mission agriculture, it is also not there. Okay, buffer stock, it is also not there in the prelims. Okay, however, question can come on these topics also. So you have to read the mains master note but on these days, what you can do, you can continue reading these 2 books. So your target should be, in next 28 days, you have to cover 2 NCRT books, macroeconomy and Indian economy, and you have to cover the Shankar Ganesh book along with this, okay, 26 or 27 mains master notes of entire economy, including the agriculture section. Okay, then what you have to do, once you cover this, then you see here, you come to this, okay, Lakshya timetable. You come to this Lakshya timetable. You will see in the Lakshya timetable, I have basically divided into various levels. Level 1 is the NCRT and level 2 is the advanced book. So you see in level 1, NCRT will come to, you see here, 1011 and 1012. You see here, macroeconomy book, okay, NCRT macroeconomy book, and you see here 1012 Indian economy, 11th class Indian economy. So once you read those 2 books properly as per the integrated timetable which I have explained just now, you take these 2 tests. So you will solve 200 questions. That will give you a strong foundation. Okay, whatever you are reading, you will be able to have a strong foundation, because once you apply them, these topics, these concepts, what you are reading, okay, in the questions, okay, then you will have that kind of confidence that I can now take up any kind of question thrown at me by the UPSC. Okay, so I can promise you the 200 questions which you will have in these 2 NCRT tests will be one of the best questions you have solved on Indian economy, particularly from the NCRT section. One of the most conceptual, okay, questions you will do, that I can promise from my side. Okay, so what is the goal right now? The goal right now in the first 28 days is basically to cover the 2 NCRTs and Shankar Ganesh along with solving these 200 questions. And here you will have daily I am giving you previous year questions for practice. So every day, day 1, day 2, day 3, I am giving you some previous year questions. So at least I am giving you 2 to 3 previous year questions every day. It depends. On some topics, more previous year questions are there. On some topics, very few previous year questions are there. So on an average, I am giving you 3 previous year questions and I am giving you 2 new questions. Okay, on an average. So 5 questions I am giving you daily. So no need to write all the 5 mains questions every day. No need to write all the 5 questions mains every day. Brainstorm them. Okay, brainstorm them. Okay, guys. Okay, it is not possible for you to write all 5 questions or all 10 questions every day. It is not possible, but brainstorming is possible. Take 2 minutes time, 3 minutes time, brainstorm them. Okay, how I will write? Okay, you must be knowing what is brainstorming. Okay, so you see here in next 28 days. Okay, so you see here 3 sectional tests. So 20 questions here, then you see 20 questions here, and then you see here 20 questions here. Okay, so around 60 questions plus around 25 days, because we have three holidays on the test day. 25 into 5, so it comes to around, okay, it comes to around how much? 125. So around 170, okay, 170, okay, mains question you will be brainstorming and you will be attempting also, because these tests you have to write. Okay, so you see here how many, okay, around 180, 185. Okay, it comes around exactly 185. Okay,
So you see here. So if you practice 185 mains question, okay, brainstorm 185 mains question, where you brainstorm 125 questions and write 60 questions, okay, and you solve around 200 MCQs, okay, then obviously your most of the concepts will be covered. Okay, so I'm now taking a 1 minute break. So you take any doubt you have, you can ask now. Okay, for the economy sections, if you have any doubt, you can ask now. Okay, so you can ask. Go on. Ask your doubt, ma'am. Yes, sir. Sir, as you said that in this economic section there are two tests, right? Yes. And then in the month of January there are two tests, Yeah, right? because the advanced test, you see here, advanced test comes in the month of January. You see here, 1031 and 1032. It comes in January. It comes in January. So what you can do is you can read the Shankar Ganesh now, and when this test will come, you can just revise in 1 or 2 days and you can take up the test. Okay, not a big problem. Okay. Okay, Okay. okay. Sir, Anything one more else? thing. Hmm. Yes, sir. Sir, I want to ask that I don't need to worry about the test which is coming on 23rd of October, right? There is a test of governance in No, 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 from no, the no. Don't worry about I'll this plan. You need not follow this plan now. You follow the mains plan and you integrate in the mains plan the prelims plan. Okay, okay. because your target right now is mains. You have to cover the mains. That is your primary Yeah, focus. Okay, so yeah. what you have to do is you have to basically incorporate this prelims timetable into the मेंस टाइम टेबल. तो आपको उल्टा Okay. करना है, आपको बेसिकली मेंस टाइम टेबल को फॉलो करना और प्रीलिम्स को इसके ऊपर लगाना है. वो कैसे लगाना है, जी. जस्ट मैंने अभी आपको एक समझाया कि इकोनॉमी को कैसे जी. लगाना है. ओके, जी. सो इकोनॉमी में कोई और डाउट है आपको? नहीं सर, इकोनॉमी का डाउट तो क्लियर है. Okay, ठीक है. Then let us go to the next section. Next section on day 30, we will start with science and technology. So science and technology, if you see already UPSC has specifically mentioned, you have to read science technology policy, Indianization of technology, achievement of Indian scientists, intellectual property rights, awareness in the fields of IT, space, robotics, biotechnology, and nanotechnology. So UPSC is already mentioned, so I have allocated one day on each topic. Guys, as far as science and technology for the prelims point of view is concerned, from the prelims point of view is concerned, you will see most of the questions are current oriented. Most of the questions are current oriented. That does not mean that you can completely ignore the static books for the prelims point of view. It does not mean. So what I have done is that in this area also, I have given, you see here, in this area also, I have given you can see here, okay, one science and technology test on NCERT I have given based on 11th and 12th. Okay, based on 11th and 12th. Here, my advice to all the sincere aspirant is that, okay, at least if you do not have time to read all the NCERTs, read class 9th, then read class 10th, and then you read biology of class 12th and 11th. Okay, biology. Okay, particularly class 12. Particularly class 12. Okay, class 12, you have to read about the second half of the biology book, which covers human body and diseases. Human body and diseases. Immunity, immunity, immunity. Okay, so these two chapters are very important nowadays because a lot of questions are coming from these two chapters because they are mostly based on application of biology in our day-to-day life. Okay, so there is one more chapter, application of biology in our day-to-day life. Okay, so please read that. Also, there is one NCERT book on chapter on biotechnology. So other chapters, what you have to do is that suppose there is a chapter on biotechnology, so you have to integrate here with biotechnology NCERT, biotechnology NCERT. Okay, so you have to read this chapter along with that. Okay, as far as other chapters are concerned, for example, if you see here, okay, in indigenization of technology, you can read the for the prelims if you are following any book, static book. For example, I am recommend everyone to go through Tata McGraw Hill. Okay, Tata McGraw Hill book. Okay, economy. So at least one economy reference book you should buy. Just keep it. No need to read cover to cover. No need to read cover to cover, but some important chapters are there where UPSC has already asked questions. For example, space technology, UPSC asks some basic questions also. For example, what is geosynchronous satellite? What is sun synchronous? So all those orbit satellites, okay, launch vehicles.
Okay, launch vehicles. So basics of these things generally UPSC sometimes asks. So I recommend every one of you to read the space technology from the basic Tata McGraw-Hill book or any other reference book you have. Any other reference book, okay, for economy you have, please read that. Similarly, for computer related questions are very popular in UPSC prelims. Okay, computer related, artificial intelligence, computers, cyber security, etc., etc. So you see here, when you read this awareness in the field of IT, space and all, please read the chapter on IT and computer from the whatever prelims material, either you have this Tata McGraw-Hill book or any material you are reading. Okay, you can follow that also. So here also what you have to do, go through the NCERT quickly. Go through the NCERT quickly. As I told you, NCERT class 9th and 10th is a must. Read class 9th and 10th. As far as class 11th, 12th is concerned, okay, always focus on application part in our day-to-day life, because in UPSC generally you will see questions will not come on very what to say, scientific concepts. Okay, they will not ask concepts, rather than they will ask application of concepts. So I'll just tell you which are the chapters. So in biology, I told you biology in our day-to-day life, diseases, immunity, okay, biotechnology and its application. These are the chapters which are important. And there is one chapter in chemistry in our day-to-day life. Chemistry in our day-to-day life, class 12 chemistry, that is also very important. Little bit, if you have time, then you can study light and telecommunication from physics, if you have time. If you don't have time, leave it. Light, why? Because generally we use, everyone is now using spectacles. Okay, glasses, we all wear glasses. So basics, you must know what is concave glasses, what is convex glasses, what are the different types of eye problems. Okay, because this we use in daily life. Okay, similarly telecommunication, what is broadband, what is the spectrum, etc., etc., all the telecommunication. Okay, so generally UPSC sometimes asks those questions also. But okay, if you can do, it is well and good. If you can avoid, I don't think it's a very big problem, because you have to see your time also. But somehow you have to finish this in this 10 days. You have to this 10 days, and here you see you have to take this NCERT test, and you see advanced test. I have put science advanced, and you can see here science advanced test. Okay, guys, are you able to see this? Okay. Yes, sir. So this also, okay, advanced test is in January. Okay, advanced test is in January. So you have to just take the NCERT test and wait for whenever it will come. You have to read, you have to basically tackle the question when that January test will be uploaded. You have to take the test then. Okay. So at present, what you can do, the economy, okay, sorry, the science and tech NCERT test you can take. Okay, but अभी आप पढ़ के रख लो. ओके, पढ़ के रख लो, आप ये सब स्पेस पढ़ के रख लो और ये पढ़ के लो. टेस्ट जब आएगा शेड्यूल में तो उस समय आप देते. बट आप ट्राई करो कि अभी मैं अपना सारा प्रीलिम्स का स्टफ जो है, एटलीस्ट जो इंटीग्रेटेड है, जो इससे इंटीग्रेटेड है, जितना कर सकते हो आप उतना आप करो. ओके, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट यू हैव इन दिस साइंस एंड टेक? No, sir, not in science and tech. Sir, साइंस एंड टेक one आई एम thing. टेलिंग यू कि क्या होता है कि क्वेश्चंस ज्यादातर, मैं बता रहा हूँ 90% करंट ओरिएंटेड ही आते हैं. तो ज्यादा भी एफर्ट नहीं डालना है इसमें कि टीएमएच लेके बैठ गए और पढ़े जा रहे हैं, एक एक पेज पढ़े जा रहे हैं. यू विल वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम. या एनसीईआरटी लेके बैठ गए, एक एक पेज एनसीईआरटी की पढ़े जा रहे हैं, नहीं, यू विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. जस्ट मैंने जो चैप्टर्स बोले हैं एटलीस्ट वो तो कम से कम पढ़ लो, विच इज एप्लीकेशन पार्ट, बायोलॉजी इन डे टू डे लाइफ, केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ. यस, यू आर सेइंग समथिंग? यस सर. सर जैसे डीपीएन में जो साइंस का मटेरियल रहता है सर, उसको कैसे इस पूरे, मतलब जो मेरा मेन का अभी नहीं करना उसको अभी मत करना. अभी वो प्लान में आएगा, आपको मैं समझाऊंगा लक्ष्य का प्लान. अभी वो आने वाला. अभी तो ऑप्टिमा प्लान स्टार्ट नहीं हुआ. अभी हम लोग नवंबर में ही है. ठीक है. अच्छा. वो करना है जनवरी में. अभी वी आर इन नवंबर. यू सी डे 36. अभी अक्टूबर चल रहा है तो डे 36 में ही, मतलब अभी हम लोग नवंबर मंथ में ही है. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू एनवायरमेंट सेक्शन. एनवायरमेंट सेक्शन topics are very limited. Okay, 4 topics are only there. Okay, so you try to read here Shankar IAS book or any environment book, whatever you want to refer. Okay, this book is also good. Other books are also good. See, books, most of the books for prelims, they have the same content. Okay, 90% the content is same. Okay, on plus you should read the NCERT environment section, which is given in the
class 12th biology book. Class 12th biology book. Okay, there is one section on environment and ecology. There is one section on environment and ecology. So you have to do that. Okay, so you have to do that. Okay, so आप ये वाला सेक्शन पढ़ लेना. इसमें 4 चैप्टर्स हैं. बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, ओके, एंड पोल्यूशन है. तो 3 और 4 चैप्टर्स आर देयर इन एनसीईआरटी biology class 12th. Okay, environment section, and you read the Shankar IS book. Okay, here also what you can do is that suppose you have to cover, okay, environmental pollution conservation, so that time you refer those same chapters in NCERT and Shankar IS. In the morning you read, in the evening you read the mains master notes. Okay, climate change, it is there in Shankar IS. One chapter is dedicated for climate change. So read in the morning from Shankar IS, and evening you read the mains master notes. I hope I am clear. I hope I am Yes, clear. sir. Anyone has any doubt? Okay. नहीं सर, तो एनवायरनमेंट में भी आप इधर आके देख लो. एनवायरनमेंट में भी आपके पास है, ये आप देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट का एनसीईआरटी का टेस्ट है, उसको आप दे दो. ठीक है, और एडवांस के भी टेस्ट है, वो देखना पड़ेगा आपको कब है. वो भी मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट के टेस्ट आपको, ओके, ये देखो एनवायरनमेंट का टेस्ट तब तक आ जाएगा, दिसंबर तक आ जाएगा ये एनवायरनमेंट का टेस्ट. ठीक है, नाउ यू सी that it will directly come. Now your many of plan is now matching, okay, because this test will be uploaded in December. तो जनरली आपका उस समय के आसपास ही आपका एनवायरनमेंट कवर हो. ओके, तो ये भी आप दे सकते हो. टाइम मतलब शेड्यूल रहेगा, शेड्यूल से मैच करता है तो आप दे सकते हो, या 10 दिन के बाद आप दे सकते हो उसको. ठीक है ना. वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट का बुक बहुत बड़ा है. ठीक, और यहाँ पे जो डेज मेंशन है, डेज मेंशन हियर आर ओनली 4 days. ओके, so obviously in 4 days entire Shankar IS and NCERT cannot be done. Don't worry. Why you don't worry? Because here आपका security है, security prelims में नहीं है. Okay, security is not there in prelims. Okay, security is not there in prelims. So you can read here environment. You can continue reading environment here. Guys, are you able to understand, guys? Ma'am, Yes, are you sir. able to understand? So Yes, sir, yes. environment you start first. What you do, I will request you, आप ये करना. First you do pollution chapter. You read from the Shankar IS book, and also you read from the NCERT book, and you cover this. Similarly, conservation chapter you read from the Shankar IS book and the NCERT book, and you read from the mains master notes. Okay. Next, similarly you do for climate change. Similarly you do for environment impact assessment also. And after that, whatever chapters are left in that book, you read in the next. You can read in the next 10-15 days, because you see here after that I have what? I have security. Security is not there in prelims. Security is not there in prelims. Ethics is not there in prelims. So आपको ये पूरा टाइम मिल जाएगा यहाँ पे कवर अप करने के लिए. If something is pending before that, something is pending before that, you will be able to cover. So I guess you see here till day 69. Till day 69 I think दिसंबर खत्म हो जाएगा. तो आप आराम से एनवायरनमेंट का टेस्ट एडवांस वाला भी दे सकते हो. तो अराउंड 300 क्वेश्चन आप एनवायरनमेंट का मेंस के साथ कवर करके दे सकते हो. Am I making sense? Are you following this? हाँ, yes, Okay. sir. Because obviously 4 दिन में तो एनवायरनमेंट आपका खत्म होने वाला है नहीं. ओके, हाँ. शंकर आईएएस का बुक खत्म होने वाला नहीं, बहुत मोटी बुक है. तो लॉजिक क्या बोलता है कि मैं एनवायरनमेंट पढ़ते रहूंगी. क्यों पढ़ते रहूंगी मैं? क्योंकि मेरा अभी इसके बाद सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी तो प्रीलिम्स में नहीं है. ठीक है, तो इसको मेंस का लिए आई विल रीड इन द आफ्टरनून 2 or 3 hours whatever I was giving, but in the morning I will continue reading environment. Okay, are you able to understand here? Okay. Yes, sir. And I will, after this is complete, I will be able to solve around 300 questions, because 200 for advanced and 100 for this one, 100 from this one. So we will be able to do it. Okay. So is this clear? So हाँ, अभी हमारा what subjects we have completed? We have completed economy, science, and we have completed science, and we have completed environment. Okay, and we have solved at least we have solved around 500-600 questions for prelims also. Okay. yes, sir. Next, we will see here. Next, we'll see here. Then we are starting with polity. Okay, day 70. We start with GS paper 2 polity. So polity, so there is no doubt, because same topics are there in the prelims also. Lakshmikant book, and you refer the polity NCERT also. Okay, you see here. Okay, some chapters you will not get, but mostly chapters you will get. Fundamental right, fundamental duty, DPSP, amendment, parliament. Okay, judiciary. Okay, dispute redressal. Okay, here a small advice I would like to give every one of you is that, okay, suppose in the next in the time which is given here, so you see here 14 days here section 1, and around 7 days for section 2 I have given. Okay, so what you can do is that
you can do is that, okay, in 21 days, you can overall make a target of 21 days. And in 21 days, 11 days, you can divide the Lakshmikant into two parts and cover the entire Lakshmikant. Okay. And you see here, I have given you, see here Lakshmikant, I have given you two tests, part 1, part 2. I have given Lakshmikant two tests, and I have given you one NCERT quality test also. You see NCERT quality test also. So along with this plan, you can cover the basically Lakshmikant also. You can integrate and you can cover and you can solve this test. Then comes the governance part. Okay, and we have a dedicated test on governance. Okay, we have a dedicated test on governance. Okay, you can see here governance test. 1020 governance test. Okay, so isko jab when you will do this, okay, day 96 to day 112. Okay, it will be somewhere around January. So you will cover this governance portion also, both from the prelims and from the mains perspective. And after covering the prelims perspective, take the 100-question test on governance. Okay, it will be a very good test. Then comes the IR part. Guys, in IR part, in prelims, there is no specific book you have to read. Okay, no need to read any specific book. What you can do is that, okay, in the month, okay, around January, this will be around February beginning. So I will be coming out with Optima compilation, where I will be giving you entire IR current affairs of last 1 year. Okay, so in that, all the important current happenings of IR, all the important organizations of international relations which are there in news in the last 1 year will be covered in the Optima notes. So वहां से आप इसका जब आप ये cover करोगे, then you follow the Optima notes of IR. You can write here Optima notes of IR, and you take. I have made a dedicated test for prelims also on IR. You see here, I have a dedicated test on prelims in IR section. You see here, IR, government schemes and indices. Okay. Okay. Obviously, this is in the month of April. So जब भी आएगा तो आप उसको उस समय दे सकते हैं. Okay. Next is GS paper 1. In GS paper 1, obviously society is not the part of the prelims. Okay. So when you are covering society, if something is left, some portion is left. Okay. Polity is left or something is left, you can cover that here. Okay, guys. Or okay, you can cover anything which is left. Okay, you can cover anything which is left because GS1 society is not there in the prelims examination. It is only there in the mains examination. Okay. Next, if you see after that, you see art and culture. So art and culture, when you are reading art and culture, please read the old NCERT and the new NCERT. Okay. And you can read the fine arts book also, new NCERT fine arts book also you can read. Okay. So with the mains master notes, okay, you try to read these books also. Obviously, it takes time. So when you have the society section, then only you can start this reading these books. Okay, because here you don't have any prelims topics. So these 10 days your prelims will be empty. So you can fill this with art and culture because art and culture is a little bit bulky portion. So you can start little bit before then the mains master note. So one reading you can give, okay, the old NCERT is before you start the mains master notes and all that. Okay. Next, modern India. So modern India, everyone knows, I don't need to speak. Spectrum. Okay. So you prepare spectrum and take the spectrum test. Then world history. Obviously, world history is not there in prelims. So you can continue reading spectrum here. So you have a target, make a target like 146 days to 160 days. And obviously, okay, India after independence is also not there in the syllabus. Okay, so it's around 167 days. So 144 days, 177 days. Okay, around 25 days. Okay, we are having for the modern India. I think 25 days is more than enough for spectrum. 25 days is more than enough for spectrum. And after that also you go here and you see here, I have given you two spectrum tests. You can see here. Okay, Modern India Part 1, Modern India Part 2. So after you reading that, you take the spectrum test. Okay. Next is the geography section. So you see here 169 to 175, around 7-8 days I have given for mains master note of geography.
Along with that, you read the NCERT also. Along with that, you read the NCERT also. Okay. So in NCERT, I have very scientifically arranged how to cover the NCERT. You can see here. Okay. So what I have done is that I have kept all physical geography book at one place, all Indian geography book at one place, and all human and economic geography book at one place. So there are three books. There are three books as far as NCERT, and not three books, basically three section of books. Okay, one is the world physical geography, where you have to read class 6, class 7th, and class 11th. Then there is Indian physical geography, class 9th and class 11th. Indian physical geography, class 9th and class 11th. And then there is human and economic geography, which is class 6, class 10th, class, okay, class 12th. Okay. So with this, you will be able to finish your entire main syllabus also, and you will be able to finish your entire prelim syllabus also one cycle with around 3,000 questions. Okay, I can promise you, if you follow this plan, so around 3,000 questions, you will be able to finish it before the month of February. And in February, you see here, you can see here, February, we are starting with the Optima plan. February, we are starting with the Optima plan, which is the revision plan, where I will be giving you Optima notes, okay, to prepare. Okay, so I hope, okay, so from that, okay, February onwards, try to start shifting towards more and more prelims preparation onwards. Okay, prelims preparation onwards. Okay, so that's why you see here, I have not kept ethics and all there. I have kept what? Geography there, because geography is there in the prelims also, geography there is the mains also, spectrum is there in the prelims also, spectrum is there in the mains also. So that is why you see how strategically I have made this timetable, that once prelim starts coming, so whatever mains also you are reading, it is in the prelim syllabus. So you are reading spectrum from the mains point of view, but it is important for the prelims point of view also. You are reading NCERT from the mains point of view, it is important from the prelims point of view also. That is why you see I have GS3, entire GS3 we have done in the month of October, November only. Entire this security we have completed. Entire disaster management we have completed. Entire we have completed the IR part, the governance part, because all those questions do not come in the prelims part. Okay, and whatever is there in the prelims also, I have kept it in the month of February and okay, March. Okay, this plan will end somewhere in March. Okay, this 180 days plan. But from the February onwards, you have to completely shift towards prelims. Okay, with little bit of mains. Okay, which basically geography and spectrum. So obviously geography and spectrum you can easily manage mains component also with the prelims. Okay, so from you can see here from the month of March onwards. Okay, from the month of February mid onwards, you will have this Optima plan. Optima plan is the most important series plan. Okay, it will start somewhere around February. Okay, so before that you will be covering the substantial main syllabus. Okay, so any doubt you have? सर नॉट फ्रॉम दिस आई हैव अ डाउट कि सर आर्ट एंड कल्चर जो है उसको याद रखने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब जैसे इकोनॉमी की तरह ही है, उसमें नाम बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं. हाँ, वो दिक्कत होते इट हैं. इज तो लाइक आर्ट एंड कि कल्चर वो का आपको क्या करना है, समझ गया मैं. आर्ट एंड कल्चर का क्या करना है आपको, ना एक मैं आप लोग को मैं एंशिएंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया का एक टर्म्स का एक फाइल दूंगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो दूंगा. ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग है. आर्ट एंड कल्चर इज आपके लिए ही चैलेंजिंग नहीं है, इट इज चैलेंजिंग फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स. सो डोंट फियर. ओके, यू थिंक कि हाँ मैं कितना कर सकती हूँ, मैं मैक्सिमम कितना कर सकती हूँ. तो हाँ, मैं एक रीडिंग ओल्ड एनसीईआरटी का दे सकती हूँ, एक रीडिंग तमिलनाडु हिस्ट्री बुक का दे सकती हूँ. उसके बाद भी आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे क्वेश्चन. ठीक है, हर क्वेश्चन को बनाना जरूरी नहीं है कट ऑफ निकालने के लिए. लेट मी टेल यू फ्रैंकली, आई हैव स्कोर्ड 140 प्लस in the prelims exam, and I can tell you even I have left art and culture course, and I have no hesitation to say this. Okay, even leaving art and culture question, I have scored 144, 145, 146. जस्ट इमेजिन. आर्ट एंड कल्चर सिर्फ आपका नहीं छूटता, मैं बता रहा हूँ मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी IAS IPS है, उनका भी आर्ट एंड कल्चर छूटता है, और वो हिस्ट्री ऑप्शनल है. कैन यू इमेजिन, मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज इन IPS, उसका हिस्ट्री क्वेश्चन छूटता है आर्ट एंड कल्चर का. तो डोंट वरी, आपका छूटता है तो डोंट वरी. बट हाँ,
यदि आपने नहीं पढ़ा और छोड़ के आ रहे हो डायरेक्टली, वो एनसीईआरटी से आ रहा है क्वेश्चन, इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, directly coming from the Tamil Nadu ancient India and medieval India book. And if you are leaving, then it is a tragedy. अभी मान लो अभी चोला, चोला इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, चोला से क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो मैं देखो आप मेरे डीपीएन में चोला रोज कवर कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, कल मैंने किया था वाटर एंड वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम वाले हाँ पे, वाटर हाँ। हार्नेसिंग सिस्टम, आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन कवर करूंगा, कल मैं कुछ और जी, करूंगा बिकॉज एक मूवी आई है चोला में। तो हाँ, बात पन्नी ये है सेलवन, कि, हाँ। हाँ बात ये है कि आपको अपना बेस्ट देना है ऑब्वियसली। मैं बता रहा हूँ मेरा अपना स्टूडेंट हिस्ट्री ऑप्शनल का, उससे हाँ भी क्वेश्चन कभी कभी नहीं बनते हैं आर्ट एंड कल्चर के, तो ऑब्वियसली यार उसमें माथा नहीं फोड़ना है अपना कि यार जी। मेरे से क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, नहीं बन रहा नहीं बन रहा, मैं बाकी के 95 क्वेश्चन बनाऊंगा, 5 क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, पर हाँ उसे ऐसे ही नहीं जाना, आई विल नॉट गिव अप, आई विल गिव माई बेस्ट, गेटिंग जी। इट, आई विल गिव माई बेस्ट। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन के पैटर्न को स्टडी करना है, व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन एंशिएंट एंड मेडिएवल। तो आप देखोगे 3 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट मी जस्ट हाँ। एक्सप्लेन टू यू। एक आ रहा है टर्म बेस्ड, ये हाँ। टर्म मेडिएवल इंडिया में क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स बोलते हैं, प्रीस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैसा वाला आ रहा है। तो उसका हाँ। मैंने एक लिस्ट, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बना के दे दिया है ऑलरेडी, मैं आप लोग को भी दे दूंगा प्रीलिम्स में, जो भी मेरे जी। टेस्ट सीरीज में उनको मैं वो लिस्ट देने वाला हूँ। उसमें आपको लगभग 300 टर्म्स में दे रहा हूँ, 300 टर्म्स, हाँ। ठीक है। तो डायरेक्टली उसको आपको रटना है, आपको याद कर लिया, क्योंकि भाई आर्ट एंड कल्चर में तो समझना कुछ है नहीं उसमें, जी। टर्म्स वाले में तो आपको रटना ही है, ठीक है। हाँ। तो क्योंकि टर्म्स वाले में तो आपको कुछ याद नहीं करना है ना, मतलब कि वो तो समझना नहीं है उसमें कि ये टर्म का हाँ। मतलब क्या है, तो याद करना, तो वो ये मैं दे दूंगा। प्लस उसमें देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आता है आजकल, हाँ। कि हाँ। ये किंग आया उसके बाद कौन किंग आया उसके बाद कौन किंग आया, तो हाँ। थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि थिंग्स कैसे इवॉल्व हुए, वो है। और ठीक है। तीसरा क्या है, फेमस एम्पायर, विजयनगर, चोला, ठीक है, ऐसे करके कुछ फेमस एम्पायर्स हैं, ठीक है, मुगल्स, ओके, इस तरह जो फेमस एम्पायर्स हैं उनके बारे में, अशोका, मौर्यन एम्पायर, हाँ। गुप्ता एम्पायर, तो ये कुछ फेमस पीरियड्स हैं हिस्ट्री के, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसके अलावा मान लो कुछ आता है, अब कुछ दिन पहले आ गया मंगोल्स और वो सब, ठीक है यार आगे हाँ। आगे छोड़ देंगे, नहीं बन रहा तो छोड़ देंगे, ठीक है। उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मेरे को पढ़ने के बाद भी नहीं बना, ठीक है, नहीं बना नहीं बना, बाकी सब तो बनाऊंगी मैं जी। बाकी सब तो बनाऊंगा, समझ रही हो आप, जी सर। डोंट वरी, हाँ। डोंट वरी। उसके बाद ऑप्टिमा स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्टिमा में यहाँ से आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा, करंट अफेयर्स आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट, करंट अफेयर्स रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा आपका, हाँ। ठीक है। So you will get an Optima notes where all the current affairs of last 1 year in one subject, one compilation will be given for revision. Economy Optima, History Optima, Geography Optima, ठीक है। तो जी उसके बाद फिर आपको बस रिवीजन करना है और देना है, सर, ठीक है इसके ना। लिए भी आप क्लास लेंगे ना ऑप्टिमा के लिए? मतलब बेसिकली आपने बुकलेट प्रोवाइड तो कर दी, लेकिन उसको यूज किस तरीके से करना है, मतलब एक कौन वाला बुकलेट? लॉजिक। सर, जो ऑप्टिमा आप जो हाँ फरवरी के हाँ, मंथ में उसमें शुरू सेशन होंगे, करेंगे, सेशन होगा, सेशन होंगे ना? ठीक है सेशन सर। होंगे। लास्ट ईयर जी मैंने सर। अराउंड 20 सेशंस लिए थे, 25 सेशंस लिए थे। इस साल भी जी। मैं सेशंस लूंगा, इकोनॉमिक सर्वे के मैंने लिए थे 5 सेशन, ठीक है। जी। बहुत सारे सेशंस मैंने लिए थे, तो इस साल भी सेशंस लूंगा मैं, पॉलिटी के 1-2 ले लूंगा, इकोनॉमी के 1-2 लूंगा, ज्योग्राफी के 1-2 लूंगा, तो वो सेशंस जी। चलेंगे, ठीक है। जी। Don't worry। सर, एक चीज, जैसे जैसे सर आप डीपीएन देते हैं, वो हम्म। डेली करना ज्यादा बेटर है ना, हाँ मतलब एज ऑब्वियसली डेली मंथली डेली, देखो कंपाइलेशन? मंथली कंपाइलेशन जो पड़ता है क्योंकि वो वो बहुत बल्की हो जाता है सर एक साथ। बल्कि तो हो ही जाता है। देखो आप कॉमन सेंस सोचो, देखो आपको मैं एक मैथ्स करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सी हाँ। सपोज आई एम रीडिंग डेली 1 आवर, हाँ। डेली 1 आवर पढ़ना बहुत आसान है, हम्म। डेली 1 आवर डीपीएन पढ़ना बहुत आसान है, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आसान है, बट हाँ। मंथ के एंड में आपको एक कंपाइलेशन मिलता है जो अराउंड 150 पेजेस या 180 पेजेस का होता है, तो उसको हम्म। पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, मिनिमम 15 to 20 आवर्स, आराम से। मिनिमम। तो 20 आवर्स पढ़ना ना टफ हो जाता है, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं उसको, ये बात लोग हम्म। समझते नहीं है, स्टूडेंट डोंट रियलाइज कि 1 आवर डालना इजी है, एकाएक 20 आवर डाल के एक मोटी बुक पढ़ना टफ है, मोटिवेशन नहीं रहता है लोगों का। जी। देखो यार हमेशा लाइफ में बोला जाता है ना, छोटी छोटी चीजें में ना आप बड़ी चीजें कर लेते हैं,
अब मान लो मैं छोटी छोटी कंकड़ डाला है मैंने, रॉक्स, स्मॉल स्मॉल रॉक्स, ठीक है, ये रॉक्स है, ठीक है। अब मैं इसी को बना के ना मैं एक बड़ा रॉक बना देता हूँ। इसको आप मूव कर पाओगे? इसको मूव नहीं कर पाओगे। क्यों? देख के ही डर लग जाता है। हो सकता है कर भी पाऊंगा मैं, इस रॉक को मूव कर पाऊंगा, हो सकता है मैं। क्यों? क्योंकि मैं जब छोटे छोटे मूव कर सकता हूँ, इसको ही मूव कर सकता हूँ मैं, बट इसको देख के मैं डर जाऊंगा। बट एक एक दिन करके मैं, एक मान लो इस छोटे से रॉक्स को, इतने रॉक्स को मैं एक बोरी में बंद करके एक बोरा में डाल दिया और बोला इस बैग को यू मूव, तो दिस बैग लुक्स वेरी ह्यूज। तो योर मोटिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देख के ही कम हो जाता है, यार कैसे मूव होगा। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, क्या ये मूव कर पाऊंगा मैं या कर पाऊंगी मैं, क्वेश्चन करने लगते हैं। पर डेली डेली एक एक रॉक उठाना बहुत आसान है। तो आप ऐसा सोच लो कि आपको रास्ता, आपको जाना, यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर पाथ ऑफ सक्सेस। you like, let me just give you one small motivation. Okay, so you are going on a path of success, ठीक है। अब आप सोच लो एक एक पत्थर उठाना इजी है या बड़े बड़े ब्लॉक्स उठाना इजी है? आप सोचो, लॉजिक सोचो। यार एक एक उठाना इजी है, क्यों? इससे मोटिवेशन कम लगता है। क्यों कम लगता है? अरे छोटा छोटा है, उठा के फेंक दूंगी। इतनी बड़ी है, अरे यार मेरा तो हेल्थ अच्छा नहीं है अभी, मेरे को मन नहीं कर रहा पढ़ने का, और ये देखो कंपाइलेशन आ गया, क्या करूं मैं इसको, छोड़ो यार, छोड़ देती हूँ, इस मंथ नेक्स्ट मंथ पढ़ूंगी। होता है कि नहीं होता? होता है। जी सर, कभी हमारा बिल्कुल। तबीयत खराब रहता है, कभी हमारा घर पे कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी घर का कुछ इशू हो जाता है, बट डेली कुछ इशू नहीं होता। डेली हम लोग 1 घंटा आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एकाएक मंथ के मतलब मैं, आपका नया मंथ स्टार्ट हो रहा है आपका, मान लो आपको कंपाइलेशन आता है 5th या 6th को, ठीक है। तो उस समय आपको मतलब कुछ भी, मतलब आपको मोटिवेशन नहीं होगा, क्या होगा, और 10 डेज लगातार आपको देना है, ठीक है, या 4-5 डेज लगातार देना है, और आपको उस समय ऑप्शनल चल रहा है आपका, कुछ और चल रहा है, मेंस चल रहा है, ये चल रहा है, कैसे आप करोगे? इसलिए लोग नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ, देखो क्या लॉजिक समझो। अब आपका कोई टाइम टेबल है, ठीक है, आपका कोई टाइम टेबल है, आप उस टाइम टेबल से पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली तो आप तो कुछ 2 घंटा एक्स्ट्रा डाल के तो नहीं पढ़ रहे हो ना, कि मंथ के एंड में मेरे को कंपाइलेशन आएगा तो मैं 4-5 दिन ना 2 घंटा एक्स्ट्रा निकालूंगी। कैसे निकालूंगी? मेरा तो टाइम टेबल फिक्स है, ठीक है। तो मंथ के एंड में यदि मेरे को कंपाइलेशन मिलता है तो उसको मैं कैसे पढ़ूंगी? नहीं पढ़ पाती हूँ मैं उसको, ठीक है, जी। क्योंकि एक्स्ट्रा मेरे को निकालना है। मेरा ऑलरेडी एक रूटीन सेट है। मान लो मैं 8 घंटा पढ़ रही हूँ, उसमें मैं ऑप्शनल भी पढ़ रही हूँ, थोड़ा मेंस पढ़ रही हूँ, थोड़ा प्रीलिम्स पढ़ रही हूँ। अब एकाएक मेरे को कोई कंपाइलेशन भेज दिया 200 पन्ने का, या 180 पन्ने का, 170 पन्ने का। अब मेरा दिमाग लगता है यार इसको कैसे पढूं, मैं क्या कम करूं अभी, ठीक है। वही असमंजस में लोग उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते, ठीक है। जी। बट डेली पढ़ा हुआ है तो इसको बस रिवीजन करना है मेरे को, ठीक है। जी। तो मैं तो बोलूंगा मंथली कंपाइलेशन करो। मैं नहीं बोला मत करो, वो रिवीजन के लिए अच्छा है, बट पढ़ने के लिए तो डीपीएन ही अच्छा है, ठीक है। ठीक है सर। जी पढ़ने के सर। लिए रोज डीपीएन पढ़ो, मंथ के एंड में जो आता है तो आप उसको रिवाइज करो क्विकली और टेस्ट दो, ओके, बस। हाँ सर। उसको पढ़ने मत बैठो। पढ़ने मतलब एक एक पॉइंट, वर्ड 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 पढ़े जा रहे हैं, तो फिर ऐसे कहाँ टाइम मिलेगा आपको? आपका ये 180 डेज का प्लान चल रहा है, आपका प्रीलिम्स का प्लान चल रहा है, कहाँ आपको मंथ में पढ़ने का टाइम मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, ठीक हाँ है। सर। ऑनेस्ट लॉजिक। और बताओ डाउट। जी। नहीं सर, ऑप्टिमा वाला जब शुरू होगा वो तो प्रीलिम्स वाला पोर्शन हो जाएगा, मतलब वो मैं रेस्ट एश्योर रहूँ। ये जो था वो उसमें डाउट था, ये तो क्लियर हुआ सर। ठीक ऑप्टिमा है का वहां सर। से आपका खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ सर, एक चीज। अब अब जैसे अक्टूबर के मंथ में शुरू किया है तो प्रीलिम्स मतलब करंट अफेयर्स तो सितंबर तक का तो हुआ नहीं है। हाँ उसको मतलब छोड़ दो, पढ़ा है, उसको छोड़ दो, न्यूज़पेपर नहीं उसको छोड़ न्यूज़पेपर दो, पढ़ा उसका है, ऐसा रीजन, नहीं है कि नहीं 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 पढ़ा नहीं, है। छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आप ये देखो टाइम टेबल देखो, ऑप्टिमा में क्या सॉलिड टाइम टेबल मैंने बनाया है, देखो ये सारा करंट ठीक। अफेयर्स यहाँ पे फिर से आएगा। ठीक है सर। अप्रैल, मतलब मैं बिना 180 डेज के लिए फुल फ्लेज्ड में लग सकती हूँ, मतलब विदाउट आराम एनी से थॉट। आराम से उस समय मैं जो ऑप्टिमा का टाइम टेबल स्टार्ट होगा वहां पे मैं एक रिवीजन टाइम टेबल डाल दूंगा उसका, ठीक है सर। करंट अफेयर्स का, मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। जी सर। जी। अभी कम से कम आप इतना कर लो, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ये जो 8 महीना है, एटलीस्ट हाँ। इसको साथ साथ करो, इसको जी पेंडिंग सर। मत कर देना। जी। बचा हुआ जो 5 महीने का पेंडिंग है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, ये जी। 5 महीना पेंडिंग है, ये हम लोग उस हाँ। समय कवर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है सर। हर महीना में भी एक एक एक्स्ट्रा करेंगे तो आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, खत्म हो जाएगा, हाँ। हाँ सर। ठीक है। यस सर। और कुछ? नहीं सर, हो गया।
ओके बाकी ओके जो ओके आएंगे मैं डाउट्स आपसे बाद में पूछूंगी। ओके वो तो ओके ओके। आएंगे ही सर, क्योंकि फ्लो में तो रहूंगी तो हाँ तो आएंगे। ठीक है, तो मैं अब ये आपसे देखो पूछ आपका लूंगी। आपको मैंने समझा दिया क्या 180 डेज का टाइम टेबल के साथ लक्ष्य को कैसे इंटीग्रेट करना है। ओके, हाउ टू जी। इंटीग्रेट 180 डेज टाइम टेबल विथ लक्ष्य। प्लीज go through this. If you have यस सर। any doubt after seeing this video also, other students also who are watching this on YouTube, okay, if you have any doubt on this, please comment in the comment box and please telegram me on the number given. I will help you. I can promise you one thing, this is a very scientific plan, very analytical plan, and mains master note is one of the most comprehensive resource on the mains. Okay, so don't waste your time, okay, doing scavenging here and there looking for notes. Okay, follow this mains master notes, follow this lecture test. I can tell you, you will be able to give your best. Have you read mains master note? Have you started reading mains master notes? यस सर। mains master note पढ़ रहे हो आप? हाँ सर, बिल्कुल। कितना पढ़ लिया आपने, कौन कौन सा पढ़ लिया? सर मैंने फर्स्ट का इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हटा दीजिए, बाकी जितने भी हैं 6, जो बाकी 6 है वो पूरे कंप्लीट किए हुए हैं। ओके, लेकिन तो एक आपको, बार रिवीजन के बाद ही मैं टेस्ट दूंगी, मतलब ओके आज कोई बात शायद नहीं, मैं तो कैसा पढ़ क्या के। आपको क्या 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 कैसा लगा मेंस मास्टर नोट्स? सर इतना इंक्लूसिव तो मुझे नहीं मिल सकता था, मतलब इतना खोजने पे भी मुझे नहीं लगता कि मैंने इतने साल प्रिपरेशन की और मुझे ये मिल जाता कहीं और भी। इतना हम्म। कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं मिलता, क्योंकि इसमें मैंने ये देखा है जितने भी एमएमएन हैं उसमें आपने इवन एग्जांपल्स दिए हुए हैं बहुत अच्छे से। वो एग्जांपल एक्चुअली में आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल है, मतलब मुझे कहीं और नहीं नहीं, जाना और पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम। मेंस मास्टर नोट्स में ऑब्जर्व किया होगा, मैंने नीति आयोग, हाँ। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, वो भी इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आपने नहीं लिया है। आपने पहले से 2015-16 से ही स्टार्ट कर दिया है। हाँ इस साल का तो लिया ही है, पुराना भी लिया है। हाँ, पुराना भी लिया है वही। लास्ट 3-4 ईयर्स का इकोनॉमिक सर्वे भी मैंने कवर किया है मेंस मास्टर नोट्स में, तो आपका कुछ छूटेता नहीं है। और आप जी। वैसा खुद से करने बैठोगे तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू। ओके, आई कैन टेल यू ऑनेस्टली, इसमें बहुत ज्यादा यस टाइम सर। लगेगा। तो जी। फॉलो दिस, इट्स अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स एंड यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज योर एफर्ट। ओके, सी यस यूपीएससी सर। में ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि द मेन चैलेंज इज क्या, टाइम का चैलेंज है, कंस्ट्रेंट है। क्योंकि हाँ। लोग कुछ लोग क्यों बिखर जाते हैं, पढ़ना शुरू सब कोई करता है, केपेबल भी हर कोई है, ठीक है, आप देखोगे बहुत कभी कभी तब एवरेज मुझे स्टूडेंट दिखता है कि मुझे आईएएस जो बन लगा जाता है, मुझे लगता है वो डिसिप्लिन है, क्योंकि टाइम टेबल, जो एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है ना, वो नहीं होता है। है। मतलब बस ऐसा नहीं वही कि बुक्स वही तो वही हमारे एकदम पास सारी एग्जैक्टली हैं, सब वही एग्जैक्टली बुक्स यही पढ़ है। रहे हैं। सब वही बुक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत आपको किसी को एडेड एडवांटेज है, किसी को थोड़ा अच्छा रिसोर्स मिल रहा है, जैसे आप मेंस मास्टर नोट पढ़ रहे हो, आपको खुद हाँ, से ही इधर उधर कर रहा होगा तो टाइम वेस्ट का तो हो वो रहा सही होगा उसका। गाइडेंस मिल जाना होता है। हाँ मेरे को बस लगता है अगर बस। सही गाइड मिल गया आपको तो शायद, जैसे मेरा मोटिवेशन बेसिकली दोबारा स्टार्ट ही इसीलिए हुआ क्योंकि जब मैंने टाइम टेबल देखा कि हाँ मुझे दिन भर में 3-3 घंटे ही देने हैं, मतलब 1-1.5 घंटा मुझे डीपीएन को देना है, 2-3 घंटे में मेरा एमएमएन हो जाएगा। तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। ये हम्म। मेरे को एक्चुअल में आपके टाइम टेबल को देख के ही दोबारा से मोटिवेशन हुआ है कि नहीं मैं कर लूंगी, आराम से नहीं मैं कर बता रहा लूंगी। हूँ ना, आप खुद देखो ना, एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, क्यों नहीं होगा? आपसे मैं जी। क्या मांग रहा हूँ, आपसे मैं कुछ नहीं, मैं आपसे 3 घंटा मांग रहा हूँ। जी। मैं आपसे सिर्फ आपका 3 घंटा मांग रहा हूँ कि 3 घंटे दो मेरे को, मैं तुम्हें मेंस देता हूँ। जी। तुम मुझे 3 घंटे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा मेंस देता हूँ। क्योंकि क्या है, मेरे को मालूम है भाई, इस बार मैंने देखा था 20 क्वेश्चन जीएस 3 में, 12 क्वेश्चन स्टैटिक थे और 12 के 12 क्वेश्चन डायरेक्टली मेंस मास्टर नोट से आए थे, डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड। और जो जी। 8 क्वेश्चन बाहर के आए थे वो डायरेक्टली करंट अफेयर्स था, जिसमें एक क्लाउड वर्स था जिसको मैंने कवर किया था डीपीएस में। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक ही क्वेश्चन था, 1900 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। एक क्वेश्चन था जो मैंने ना डीपीएस में कवर किया था, ना मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया था, वो था सॉइल फॉर्मेशन में कैसे कैसे क्या होता है, वो बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ओके, बायोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ा है हम्म। और आपने अच्छे से एनवायरनमेंट पढ़ा है तो आप उसको लिख सकते हो। सॉइल का बेसिकली क्वेश्चन था कि सॉइल में कैसे ऑर्गेनिक मैटर कैसे मिक्स होता है, तो वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज था जो ऑब्वियसली मेंस मास्टर नोट में मैंने नहीं कवर किया था, वो पॉसिबल नहीं था कवर करना। बट 19 क्वेश्चंस आई कैन टेल यू वाज डायरेक्टली फ्रॉम मेंस मास्टर नोट्स 12। एंड बाकी के जो 7 थे वो डीपीएस में करंट अफेयर्स से थे, वो जो डीपीएस से ऑलरेडी कवर हो गए। तो आई कैन प्रॉमिस यू
दैट आपने अच्छे से मेंस मास्टर नोट पढ़ा है तो 12 से 15 क्वेश्चन तो आप जैसे छाप के आने वाले हो, छापना है बस आपको, पढ़ा हुआ छापना है वहां पे जाके, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही है, बस आपको वही है कि डेली अब उसको छोड़ना नहीं, इन्हें ये 4 दिन छोड़ दिए तो प्लान नहीं हो पाएगा। ये प्लान बहुत स्ट्रिक्ट प्लान है, जी 180 डेज का प्लान है। अब इसको आपने जी 4 दिन कहीं और चल गए, नहीं पढ़ा, शादी में चल गए, कहीं उधर चल गए, घूमने चल गए, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा पूरा। जी ठीक है, ये कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा कि नेक्स्ट 180 डेज आई एम कमिटेड टू दिस प्लान। ओके, इफ यू आर कमिटेड टू द प्लान विल रिवॉर्ड यू, आई कैन टेल यू, द यस प्लान इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू। Okay, no one else, the plan is going to reward you itself, because the fruit of following the discipline, okay, is that it makes your approach is very scientific. It makes your approach very scientific. तो बस, और इसमें क्या होता है ना, डेली जब हम लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, तो हमें लगेगा भी नहीं कि कैसे हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। और ऐसे ही आप आज बैठो और बोलो नहीं मेरे को पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आप हताश हो जाओगे। और यहाँ एक पाथ बना हुआ है आपको, ठीक है। ठीक है, then thank you थैंक यू guys, सर and if you like the video and if you're watching this video on YouTube, please basically um, uh, try to follow this plan, like the video and share the video with every UPSC aspirant who is preparing for UPSC prelims and mains for next year. Thank you, bye bye, take care. थैंक यू सर